Yes, you saw it right. BCom exams just after my inter exams. पर थैंक गॉड कि ये एग्जाम्स मेरे इंटर के एग्जाम्स के साथ क्लैश नहीं हुए, वरना तो और बुरा हाल होता। एग्जाम डेट्स आर 19th, 24th, 27th and 30th. 19th done. Right now my whole focus is on 24th December. Subject company law. Only 3 days left for examination. So let's go. Hey guys, welcome back to my channel. I am your friend Shubham and also a CA intermediate student. And welcome to the another study vlog after a long time. Hey everyone, I just woke up and आज बहुत हेक्टिक डे होने वाला है बिकॉज 3 दिन बाद मेरा लॉ का एग्ज़ाम है बीकॉम का। सो दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग टुडे बिकॉज जब भी मैं लेज़ी होता हूँ तो माइंड में चलता रहता है कि शुभम पढ़ ले, रिकॉर्डिंग हो रही है। सो दिस इज़ एंड मैं आपसे फ्रेश होकर मिलता हूँ एंड आप नहा धो के मिलता हूँ आपसे। ओके, सो गाइज आई एम रेडी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडी। बट उससे पहले यहाँ पर टेबल लगानी पड़ेगी जो कि उस कमरे में है, तो अभी मैं वहां से टेबल लाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा। सो या करते हैं स्टार्ट। तो तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने कंबल क्यों लगाया, क्योंकि इसका मेन रीजन ये क्योंकि ये जो कुर्सी है ये थोड़ी नीची है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी पढ़ने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि टेबल मेरे फिर यहाँ तक आती है, तो इसलिए लिखने में और पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। मैं इसलिए कंबल लगाता हूँ ताकि ये एक लेवल बन जाए और मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। ये है एसवेल का मटेरियल, 2 बुक्स लॉ की, एंड ये मैं लाया हूँ सतीश एंड ब्रदर्स की 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में यह होता है कि लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो सिर्फ मैं इसे पढ़ूंगा क्योंकि 3 दिन में पूरा सिलेबस डीपली कवर करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। सो दैट्स वाई आई बॉट दिस। इसलिए मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ूंगा एंड इससे मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि बीकॉम का जो लॉ का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट इंटर के सिलेबस जैसा ही है। सो दैट्स व्हाई आई एम ओनली कवरिंग दिस 10 ईयर। एंड मैं उसके बाद किसका मैसेज आया, सीए फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से सिर्फ अनअकैडमी पर। ये तो बहुत सही न्यूज है यार। आई थिंक अनअकैडमी इज अ नाइस ऑप्शन बिकॉज आपको सब्सक्रिप्शन लेने से आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू अनलिमिटेड एजुकेटर्स। तो आपको जिससे पढ़ने में मजा आता है आप उसके साथ पढ़ सकते हो। तो अगर आप मई 22 में अपना सीए फाउंडेशन देने वाले हो, सो इट्स अ ग्रेट न्यूज बिकॉज दे विल ऑल्सो प्रोवाइड अ परफेक्ट प्लान टू क्लियर सीए मई 22 एग्जाम। एजुकेटर्स यहाँ पे टाइम टू टाइम रिविजन्स भी कराते रहते हैं और आरटीबीज, एमटीबीज सब कुछ कराते रहते हैं ताकि आपका टाइम टू टाइम रिविजन होता रहे एंड आप कोई भी कॉन्सेप्ट्स या फिर कोई भी थ्योरी पोर्शन भूलो ना। मैराथन को कैसे भूल सकते हैं यार, क्योंकि मैराथन में आपका एक ही दिन में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, तो इसलिए मैराथन भी वो टाइम टू टाइम कंडक्ट कराते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डाउट्स। अगर आपका पढ़ाई करते वक्त आपके डाउट्स ही सॉल्व ना हो तो पढ़ाई करने का कुछ मजा नहीं आएगा, राइट। तो इस वजह से आप लाइव क्लासेस में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जिससे आप अच्छे से एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स भी फ्रीली पूछ सकते हो एंड वो सॉल्व कर देते हैं। आई पर्सनली फील कि किसी भी फैकल्टी का डाउट सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किए। जैसे जब मैंने ग्रुप 1 की रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी तो उनका डाउट सपोर्ट इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो एक तरह रिकॉर्डेड क्लासेस थी और वो कहते थे कि अगर आपको डाउट पूछना ही है तो आप मेल करके पूछो। अब मेल करने से क्या होता है, जब आप डाउट पूछते हो तो मेल इंस्टेंट तो आता नहीं है, ऑन द स्पॉट हमारा डाउट क्लियर नहीं हो पाता। आई जेन्युइनली फील कि अनअकैडमी एक अच्छा ऑप्शन है एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं जो मेरी इंटर की ग्रुप 2 की क्लासेस हैं वो भी मैं अनअकैडमी से लूँ। अनअकैडमी जो है वो टेस्ट सीरीज भी लेता रहता है टाइम टू टाइम। यू कैन यूज माई कोड शुभम 2022 टू गेट 10% ऑफ एंड या लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बहुत बातें हो गई, नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडी, सो लेट्स गो।
wherever if you wanna go, I'm down. 'Cause darling, we were made for bigger things. I just completed the 2 question papers and now it's time for the lunch. But before this, let me show you the awesome weather. While having my lunch, I was watching my own videos because I'm selfish. Lunch done and it's time for another study session. But before that, please subscribe if you haven't subscribed this channel because more awesome videos are coming soon. Yes? Tell me, babe, wanna leave this town? Finally, another 2 question papers are done and it's time around 5:30 and I'm going to the gym. Yes, I'm going to the gym because एग्जाम से पहले मैंने कहा था कि जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, जरूर जाऊंगा. एंड एग्जाम्स आर ओवर And after that, I did some editing of my upcoming video. Today I completed almost 6 question papers. Now it's time for the sleep. Bye bye. And like this video, please subscribe the channel because more awesome videos are